Can I optimize my brain power? Absolutely, 100%. कैसे? There are so many different ways to do it. जैसे कि, one is that, your thoughts. इसके ऊपर तो बहुत सारे चर्चा होता है, यानी कि you talk about something called thought process re-engineering. Yeah, that's where I got my PhD. Yeah. Okay. Yeah. क्या होता है thought process re-engineering? How do you re-engineer? किस तरीके से आपका thought process को re-engineer करे? यानी कि Explain with example. Okay. Now, एक सिचुएशन हो रहा है. Suppose अभी यहाँ पे power failure हो गया. Suppose, imagine. So, in which way I'm going to respond or you are going to respond may be different. Situation same ही है ना? हाँ. क्यों हम दोनों अलग अलग तरीके से respond हो रहा है? It's mainly because the kind of thought we get when an incident happened. तो वो जो thought है, वो thought उस moment से नहीं होता है. वो जो सोच जो भी आता है, the thoughts, which is actually coming out of stored information. जैसे कि आपके बचपन से लेके आज तक, normally it says that you are storing data, your brain is storing data 3 months prior to your birth. So वहाँ से लेके जितना भी इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन के अंदर स्टोर्ड है, ब्रेन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड प्रोसेस करके एक सोच क्रिएट कर रहा है. Yeah. So you cannot change thoughts just like that. कुछ लोग कहते हैं कि you have to change your thoughts. You cannot, because that's the way you are being programmed. That's a pattern. Yeah. It's already created. Now the only thing on which you can work on, जैसे मेरा एक सोच आ गया, और normally the thought will lead to what? An action or a word. Yes or no? Yeah. तो इसके बीच में मैं इंटरवीन कर सकता हूँ. I got a thought. How I need to reflect now is something which should be my choice. Yeah. इसलिए मैं कहता हूँ कि you have to put a filter called choice. That's how we start making people practice this. कुछ लोग कहते हैं मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, जो सोचने के पहले ही मैं बात करता हूँ. ऐसा कभी नहीं होता, सोच के ही बात कर रहे हैं. So how do you change the way you think? You cannot change the thought. How do you change the way you think? The way you think, generally, that is what we call it as paradigms. So thought process re-engineering, हमने जो स्टडी मैंने किया है, वो इसलिए मैंने किया क्योंकि मैंने तो 2000 से लेके बहुत सारे मोटिवेशन प्रोग्राम्स किया. लॉट्स ऑफ माइंड पावर प्रोग्राम्स मैंने किया, यानी कि हजारों लोग अटेंड किया. लेकिन ऑनेस्टली मैंने देखा है नॉर्मल मोटिवेशन, माइंड पावर, ऑल दोस काइंड्स ऑफ स्टफ, जनरली दी लॉन्जेविटी इम्पैक्ट ऑफ दोस प्रोग्राम्स अगर आप देखें तो होता है 2 हफ्ते 3 हफ्ते, वेरी शॉर्ट. उसके बाद तो नॉर्मल लाइफ तो उनको कंप्लीटली स्वालो करते हैं. सो इसलिए मैंने सोचा कि जो लोग सक्सेसफुल है, कंसिस्टेंट है, परफॉर्मर्स है, what is the difference? Where is the difference? That was the time I started studying more about brain and neuroscience, just from kind of an academic interest, but it was really exciting क्योंकि science से कहते हैं कि 90% of what you know about your brain is being found after 1990. So it's a new science as such. अगर आप very new. So neuroscience में neuroscientist होता है, neurophysicians होता है. We think that it's all their job. I consider my hand as separate from me. This is my hand. लेकिन जब ब्रेन के बारे में बात करते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि that's me. Yeah. So the first and the foremost awareness we should have is that I'm not my brain. Okay, my brain is another organ. Okay. And the most interesting thing, Raj, what I understood in my life is that the most trainable organ in your body is brain. How do I train it? Whichever way you want to train, only thing is that you should know the techniques of training, that's all.